In this video, we will discuss about technical barrier to trade, TBT and SPS, sanitary and phytosanitary measures. These two agreements we will discuss. Before that, we will discuss little bit about World Trade Organizations and what is its importance. So the World Trade Organizations came into being 1995. It is the youngest organizations. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में से ये बहुत यंगेस्ट है क्योंकि 26 साल इसको जस्ट हुआ है. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द सक्सेसर ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड. सो GATT का सक्सेसर है. उससे पहले WTO से पहले क्या था ना, GATT था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड. वो 1947 के आसपास GATT एस्टैब्लिश हुआ था. उसका फाउंडिंग मेंबर है पाकिस्तान. While the WTO is still young, the multilateral trading system, ये multilateral लेवल में डिफरेंट लेवल में ट्रेडिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है टू डिफरेंट मेंबर नेशंस. दैट वाज ओरिजिनली सेटअप अंडर GATT 50 ईयर्स पहले. जो सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ था इंटरनेशनल ट्रेड बनाने के लिए, उसी का ये WTO फॉलो करता है. तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग सिस्टम? द 10 बेनिफिट्स ऑफ द WTO ट्रेडिंग सिस्टम इंक्लूड्स द सिस्टम हेल्प्स प्रमोट पीस. देयर शुड बी पीस बिटवीन countries, those who are dealing with trades. Then how to handle disputes? What disputes are handled constructively? अच्छे से disputes, जो भी dispute है, जो भी मतांतर है, वो उसको अच्छे से सॉर्ट आउट करते हैं. रूल्स मेक लाइफ ईजियर फॉर ऑल. डिफरेंट जो रूल बनाते हैं वो इजीली हैंडल होता है. देन फ्रीयर ट्रेड कॉस्ट द कॉस्ट्स ऑफ लिविंग. कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी कमाता है क्योंकि फ्री ट्रेड फ्रीली होगा तो कॉस्ट ऑफ लिविंग अच्छा होगा. उस प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो भी फुलफिल हो सकता है. देन मोर चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड qualities. This is qualities. More choice of products and qualities. Then trade raises income. ये भी अच्छा चीज़ है, ट्रेड इनकम जनरेट करता है. Then trade stimulates economic growth. एक नेशन का इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होता है? ट्रेड की वजह से. The basic principles make life more efficient. Then governments are shielded from lobbying से शील्ड होता है. द सिस्टम एनकरेजेस गुड गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है क्योंकि इस WTO के वजह से ज़्यादा गवर्नमेंट का इंटरफेयर की ज़रूरत नहीं होता है. उसकी वजह से क्या होना था, ये गुड गवर्नमेंट को एनकरेज कर सकता है. ओके. देन उसके बाद क्या ना, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, द WTO का जो डिफरेंट एग्रीमेंट होता है वो क्या कवर करता है? गुड्स, सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर ये सब एग्रीमेंट जो बनता है गुड्स, सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर बनाते हैं. और क्या, द स्पेल आउट द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबरलाइजेशंस एंड द परमिटेड एक्सेप्शंस. They include individual countries' commitment to lower custom tariffs, okay, and other trades barriers, and keep open services market. They set procedures for settling disputes. They prescribe special treatment for developing countries. डेवलपिंग कंट्री जो डेवलप करने के लिए चल रहा है उसके वो स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं जो कि वो जल्दी से डेवलप करें. देन दे रिक्वायर गवर्नमेंट्स टू मेक देयर ट्रेड पॉलिसीज ट्रांसपेरेंट.
ओके, सो ट्रांसपेरेंट ट्रेड पॉलिसी शुड बी देयर, वो भी हेल्प करते हैं उसमें. एंड दे शेयर कॉमन 3 पार्ट स्ट्रक्चर्स. देन मेन पॉइंट, एग्रीमेंट ऑन सैनिटरी एंड phytosanitary measures and technical barrier to what? Trade. Agreement on sanitary and phytosanitary measures, SPS and technical barrier to trade, TBT. So this agreement, this SPS agreement is set for what? For basic rules for food safety and animal and plant health. So basic rules बनाते हैं फूड सेफ्टी, एनिमल और प्लांट हेल्थ का स्टैंडर्ड के ऊपर. सो एनिमल का हेल्थ कैसा रहना चाहिए, प्लांट का जो प्लांट अगर एक्सपोर्ट हो रहा है और ट्रेड हो रहा है तो उसका क्या स्टैंडर्ड, हेल्थ स्टैंडर्ड क्या रहना चाहिए. फूड अगर ट्रेड हो रहा है तो उनका फूड सेफ्टी क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस वो सब रहना चाहिए. वो सब आ जाता है क्या, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर SPS में आ जाता है. इट अलाउज कंट्रीज टू सेट देयर ओन स्टैंडर्ड्स. कंट्रीज खुद का ओन स्टैंडर्ड भी बना सकता है, बट इट ऑल्सो सेज रेगुलेशंस मस्ट बी बेस्ड ऑन साइंस. जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया जाता है वो बेस्ड ऑन साइंस होना चाहिए, आर्बिट्रेरीली नहीं होना चाहिए. पर्सनल गेन और पर्सनल बेनिफिट और सम इलॉजिकल science standards not science standards should not be developed. अपने मन के मुताबिक कोई भी स्टैंडर्ड बनाना उपयुक्त नहीं होना चाहिए. ओन स्टैंडर्ड बना सकता है कंट्री फॉर फूड सेफ्टी बट बेस्ड अपॉन साइंस. ओके, दिस शुड बी अप्लाइड ओनली टू द एक्सटेंट नेसेसरी टू प्रोटेक्ट क्या, ह्यूमन, एनिमल और प्लांट लाइफ और हेल्थ. ये सब स्टैंडर्ड जो बनाएंगे वो किसके लिए होगा ना, प्रोटेक्ट ह्यूमन, एनिमल, प्लांट लाइफ और हेल्थ. एंड दिस शुड नॉट आर्बिट्रेरीली, ये बोल रहा है आर्बिट्रेरीली नहीं होना चाहिए. अनजस्टिफिएबल डिस्क्रिमिनेटेड कंट्रीज और आइडेंटिकल और सिमिलर कंडीशंस प्रिवेल्स. एक कंट्री का कंडीशंस दूसरे कंट्री का कंडीशंस सेम है बट स्टैंडर्ड्स कुछ डिफरेंट नहीं होना चाहिए, जो कि इस कंट्री के लिए एप्लीकेबल हो उस कंट्री के लिए एप्लीकेबल नहीं हो. ऐसा कुछ भेदभाव नहीं होना चाहिए, इनजस्टिफिएबल नहीं होना चाहिए. ओके, देन द एग्रीमेंट स्टिल अलाउज कंट्रीज टू यूज डिफरेंट स्टैंडर्ड्स and different methods of inspecting products. The decision to negotiate an agreement on the application of sanitary and phytosanitary measures was made on 1986 when the Uruguay round was launched. The SPS negotiations were open to all 124 governments which participated in the Uruguay round. Then all countries maintain measures to ensure that food is safe for consumers and to prevent the spread of pests. The main concern of SPS is also to control pest. To control what? Pest or disease among animals and plants. Because what happens when a country is sending plants or animals, along with that plants and animals or food, there is a chance of sending of what? Pest. So this pest may cause harm to their habitat or their different agricultural products. So this SPS is also to control different pests, to those pests which travel along with the products. Okay,
So SPS agreement can take many forms, such as recurring products to come from a disease-free area, inspection of products, specific treatment or processing of products, setting of allowable maximum level of pesticide residues or permitted use of only certain additives in food. Then sanitary and phytosanitary measures apply to domestically produced food or local animal diseases, as well as to products coming from other countries. So sanitary part mainly deals with what? It deals with the human and animal health को डील करता है. एंड फाइटोसैनिटरी पार्ट्स डील विथ क्या पार्ट करता है? प्लांट. बिकॉज यू कैन सी दिस फाइटो मीन्स plant. So phytosanitary part deals with the plant health measures applied to domestically produced food or local animal diseases. Okay, then what is there? Then we'll discuss TBT, technical barrier to trade, and this agreement was developed in Tokyo. Okay, then this TBT, technical barrier to trade, was negotiated in the 1979 TBT agreement, or it is also called standards code. Although this agreement was not developed primarily for the purpose of regulating sanitary and phytosanitary measures, it covered technical requirements resulting from food safety. Whatever the technical requirements, suppose HACCP, hazard analysis and critical control point, all this technical part is dealt in TBT measures. Okay, including pesticide residues limits, inspection requirement and labeling, health. All these things, this TBT is dealing with what? Different technical barriers. These barriers is applicable for what? To prevent all those unnecessary food safety problems. Okay, so these are established to prevent bad impact on plants, animals or human health. Okay, and whatever the standards developed by codex is also included in this TBT agreement. Okay, and the governments which were members or have also agreed to these TBT agreements. Okay, then basically the scope of SPS and TBT agreements are different. The SPS agreements covers all measures which purpose is to protect all these things we have already discussed. Then, and this TBT agreement also includes like labeling requirements, nutritional claims and concerns, quality and packaging regulations. All these things are not included in SPS, that's why these are included in TBT agreement. So these also include what? Macrobiological contaminations of food, allowable levels of pesticides, veterinary drugs, residues, or identify permitted food additives. These are all falls under SPS agreement. So these are SPS agreement, and hence these are excluded in TBT agreement. Now some packaging and labeling requirements directly related to safety of the food are also subject to the SPS agreement. So there is some common things are there, so that also you have to set. Okay, so in overall you can see both SPS and TBT agreement, this wholly protect human health. Okay, the two agreement have some common elements. Just you have
discussed. They have some common elements including basic obligations for non-discriminations and similar requirements. All these things are there. Then sanitary and phytosanitary measures may be imposed only to the extent necessary to protect animal, human and plant health. On the basis of scientific informations, governments may, however, introduce TBT regulations whenever necessary to meet a number of objectives such as national security or preventions of deceptive practices. Time to time, government can include different TBT regulations. So, with this, we have understood World Trade Organizations and the different agreement like SPS and TBT agreements included for doing trades between different countries. Okay, thank you a lot.